Hello students. So in this video we will talk about work done by a constant force, which is a subtopic of the chapter work, energy and power. So start करने से पहले हम लोग free body diagrams बना लेते हैं. Let us say we do have a smooth surface जिसके ऊपर एक m mass का object बैठा हुआ है. तो इसका weight obviously will act in downward direction, and let us say we are pulling this object along this direction. And the force that we have applied externally is F. तो अगर और हम लोग इसको एज एन एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो अगर एक्स एक्सिस के साथ जो एक्सटर्नल फोर्स है वो थीटा एंगल कर रहा है, तो माय कंपोनेंट्स आर F cos theta along x axis and F sin theta along y axis. Now this F sin theta will be balanced by the weight of the object. So we can write it like this, because y के डायरेक्शन में हमारी कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो net force along y axis is actually 0. But the net force along x axis, what about that? That is not equals to 0. That is equals to F cos theta. And due to this force, the object, let us say that object is moving by a distance s. तो हम लोग इसको वर्क डन को कैसे लिखेंगे? As we know that work done is equals to force applied into displacement. तो यहाँ पे effective force क्या है? F cos theta into displacement. F cos theta is a force that causes the displacement of the object. तो F cos theta force के वजह से जो बॉडी है वो F cos theta के डायरेक्शन में इस डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहा है. तो we can write it like this as well कि F S cos theta. Now थीटा क्या है? थीटा है एस और एफ के बीच की एंगल. सो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस. तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करें? वी कैन से कि वर्क डन इज द इक्वल टू the scalar product or the dot product of the force applied and the displacement of the body.